Ladies and gentlemen, yoga is one of India's greatest gifts to the world, a timeless practice that promotes harmony of body, mind, and spirit, and today serves as a global pathway to health and well-being. To recognize exemplary contributions in advancing this universal legacy, the Honorable Prime Minister of India instituted the Prime Minister's Yoga Awards, announced during the second International Day of Yoga celebrations in 2016. These awards honor individuals and organizations, both nationally and internationally, whose sustained efforts have made a lasting and meaningful impact in the promotion and development of yoga. Presented annually on the occasion of the International Day of Yoga, the awards span 4 categories, recognizing excellence across national and international domains. Each award carries a trophy, a certificate, and a cash prize of 25 lakh rupees. Today, we request the Prime Minister to award the winners for the years 2021 to 2025. And to receive the first award, we have the youngest awardee today. He is 90 years young, Professor Lakshman Kumar Sannal Apnavar, yoga educator, researcher, and institutional pioneer. Professor Sannal Apnavar is a pioneering educator who institutionalized yoga as an academic discipline in India and globally. He still practices yoga for 4 hours every day, and his lifelong dedication has democratized access to yoga education across generations and borders. We now have Venerable He considers himself very fit, and so he's fighting all our efforts to help him. Congratulations, Professor Lakshman Kumar Sannal Apnavar. We move on to Venerable Bhikkhu Sangasena, humanitarian monk and visionary meditation master, whose life works blends spiritual practice with compassionate service in Ladakh and beyond. Through the Mahabodhi International Meditation Center, he has transformed lives by integrating yoga, meditation, and social upliftment.
Thank you, Venerable Bhikkhu Sangsena, sir, for your blessings. The Divine Life Society Global Yoga and Spiritual Institution, founded by Swami Sivananda, the Divine Life Society is a globally respected institution advancing yoga, Vedanta, and selfless service for nearly 9 decades. Its enduring legacy continues to guide millions through a harmonious blend of spiritual discipline and social responsibility. Yogacharya Jadranko Miklek, Vice President, European Yoga Federation. He's a global ambassador of yoga and Ayurveda, bridging ancient wisdom with modern wellness science. With over 5 decades of teaching, his work has advanced yoga as a universal discipline for health and harmony. Vasudeva Kriya Yoga, global spiritual and wellness movement, founded by Dr. Rajendra Yennakanam Mule. Vasudeva Kriya Yoga is a global movement promoting healing, unity, and spiritual growth through yoga. Dr. Ramesh Bijlani, physician and visionary yoga educator. A renowned physician and yoga scholar who has seamlessly bridged modern medical science with ancient yogic wisdom, his contributions have shaped integrative health education and inspired holistic living worldwide. Professor Gio Leong Lee, Chair Professor of Yoga and Meditation, Seoul Cyber University, a distinguished scholar who has brought Indian yoga and philosophy into East Asian academic discourse. Through teaching, translation, and leadership, he has built enduring intellectual bridges across cultures. Amira Ahmad Fahmy Ibrahim, yoga advocate and cultural bridge from Egypt. She's from Egypt and the Arab world. Her work has expanded yoga's reach while respectfully integrating it with regional cultural contexts. And the Bharatiya Yoga Sansthan, premier non-profit yoga movement, a pioneering organization delivering free yoga education across India and the world for over 5 decades. The remote. Ladies and gentlemen, we now move to a significant milestone in strengthening regional health cooperation. The World Health Organization Southeast Asia Regional Office, CIERO, has been a cornerstone of public health leadership for the region. And today, we respectfully invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, together with the DG of WHO, Dr. Tedros, to virtually inaugurate the WHO CIERO building in New Delhi by clicking on the remotes. Today, this commitment takes concrete form with the virtual inauguration of the redeveloped WHO CIERO building. In the heart of New Delhi. A significant step forward in public health infrastructure has taken shape under the leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and the Government of India, reflecting India's growing role in global health leadership and cooperation. The role of global institutions like the WHO was certainly important in the past, but it will be even more important in a future full of challenges. India is committed to helping every effort to build a healthier world. The newly constructed building of the World Health Organization Southeast Asia Regional Office marks a renewed phase in regional and global health engagement.
Originally established at this site in 1963, the earlier modest G+5 structure with a built-up area of approximately 10,500 square meters has been transformed to make way for a modern facility at a cost of over $35 million, financed fully by the Government of India. The new building comprises 3 towers with a total built-up area of over 40,500 square meters, rising up to 15 floors. Designed as an integrated workplace, the new WHO Southeast Asia Regional Office building will support efficiency, collaboration, and coordinated action. It will accommodate approximately 600 professionals and include open office spaces, leadership offices, conference and meeting facilities, an auditorium, and essential support services. The project also preserves the site's cultural legacy. Original artworks by M.F. Hussain and historic Portuguese-style murals have been carefully restored and thoughtfully reintegrated into the new building. Sustainability is integral to the design, with energy-efficient systems, solar power, water management, and landscaped terraces. More than a building, the WHO CIRO headquarters will serve as a space for collaboration, strengthening regional partnerships, reinforcing Bharat's role as a trusted leader in global public health, and contributing to the vision of Vikasit Bharat by 2047. May I now request the Honourable Union Minister for Health and Family Welfare, Shri J.P. Nadda, to please address the gathering. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस, हमारे भारत सरकार में आयुष के मंत्रालय के मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी, हमारे विभिन्न देशों के आए हुए आदरणीय स्वास्थ्य मंत्रीगण, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो प्रतिनिधि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के हैं वो सब, और हमारे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, देवी और सज्जनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज जो सेकेंड ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन पर हो रहा है, उसके समापन समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से सबसे पहले तो उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर टेड्रोस जो अपना समय भारत में इस ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए उन्होंने यहाँ पर आने का कष्ट किया और वह पिछले 2 दिनों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और उनका बहुत ही सहयोग मिला है, इसके लिए उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में रुचि दिखाकर पिछले 3 दिनों से हर विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, उनका भी भारत में स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं उनके सकल सहयोग के लिए। पिछले 3 दिनों में जो आप सब की सहभागिता रही है, जो विचारपूर्ण चर्चा हुई है और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने प्रतिबद्धता, अपना कमिटमेंट जो आपने प्रदर्शित किया है, वह सच में बहुत ही सराहनीय है। और यह समिट एक हमको अवसर भी देता है कि इस अवसर के माध्यम से एक नई गति के साथ हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। नॉलेज शेयरिंग, एक्सपीरियंस की शेयरिंग,
ये सब ने इस समिट को बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही फायदेमंद, उपयोगितापूर्ण ऐसा यह समिट हम सबको देखने को मिला है। मैं अपने मंत्रालय की ओर से एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए होलिस्टिक मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसके प्रति उनका समर्पण जब से वो प्रधानमंत्री नहीं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से उन्होंने इसको दिशा भी दी है और दृष्टि के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये इन्हीं के कारण आज हमको जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में, वह उसका रूप जो हमको देखने को मिलता है, जो स्वरूप देखने को मिलता है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच और जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आगे बढ़ाने का काम किया है, वह उस सोच का नतीजा है। हमें यह भी मालूम है कि गुजरात में जामनगर में पहला ग्लोबल समिट हुआ था और अब दूसरा ग्लोबल समिट न्यू दिल्ली में भारत में हो रहा है। ये दोनों ग्लोबल समिट इस बात के प्रमाण हैं कि भारत ट्रेडिशनल मेडिसिन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे ले जाने के लिए समर्पित है। इस बात को हम जानते हैं। हमारा ये जो वाइब्रेंट समिट, ये जो समिट का जो वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है, आपसी सहयोग के साथ, रिसर्च के साथ, इनोवेशन के साथ, ट्रेडिशनल नॉलेज को जोड़ते हुए एक पायनियरिंग स्टेप के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है और यह ग्लोबल समिट में उसके साथ हम अपने आप को जोड़ रहे हैं। मैं आप सबके साथ यह भी बताना चाहता हूं कि जहां तक भारत में मॉडर्न मेडिसिन है, उसमें भी बहुत परिवर्तन लाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच के कारण उसमें हमको सफलता मिली है और हम उसमें अग्रसर हुए हैं। जो हमारी स्वास्थ्य नीति पहले हुआ करती थी, वो क्यूरेटिव हेल्थ पॉलिसी थी, यानी सारा जोर इस बात पर होता था कि बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। यानी उसका अर्थ ये बनता था कि जो खाओ, जो पियो, जैसे रहो, सिर्फ दवाई के उपचार के सहारे ही तुम अपने स्वास्थ्य की चिंता करो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में नई पॉलिसी आई, नई हेल्थ पॉलिसी, नई स्वास्थ्य नीति आई और वह स्वास्थ्य नीति होलिस्टिक स्वास्थ्य नीति बनी। होलिस्टिक स्वास्थ्य नीति में संपूर्णता में स्वास्थ्य को सोचो, प्रिवेंशन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, जेरियाटिव और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोड़ा वो है इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इंटीग्रेशन करो, साइलोज में मत चलो और इसको करने के लिए एविडेंस बेस्ड, और इसीलिए आज हम सब ने देखा है कि एविडेंस बेस्ड रिपोजिटरी बन रही है। हर एक देशों के जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम जोड़ रहे हैं और उस शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सिर्फ कोई देश, भारत ही लाभान्वित ना हो, दुनिया लाभान्वित हो, मानवता लाभान्वित हो, इस बात के लिए हम प्रयासरत हैं और वह आपके नेतृत्व में हम सब लोगों ने करने का प्रयास किया है। इसलिए और इसके अंदर जो हम एक पायनियर स्टेप ले रहे हैं, लिया है, वो है इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ जोड़ रहे हैं। यह अपने आप में बहुत तीव्र गति देगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जब जोड़ेंगे, जब हम एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बात करते हैं, तो मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत में अब हम लोगों ने मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आयुष को भी जोड़ा है। आयुष ब्लॉक बनाए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। हर 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयुष को स्थान दिया गया है और सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम मॉडर्न साइंस के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ सकें और सभी मानवता की सेवा के लिए
हम सभी विधा की उपयोगिता को बढ़ा सके, यह हम सब लोगों ने करने का प्रयास किया है। आज जब मैं यहाँ पर समिट की चर्चा कर रहा हूँ तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उनके प्रयासों से आज जो 2017 में हमने सपना देखा था, वह साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो बिल्डिंग है साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, आज वह आपके और डॉक्टर टेड्रोस के करकमलों द्वारा समर्पित हुई है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद भी देता हूं और बधाई देता हूं कि यह हम बिल्डिंग का श्री गणेश हुआ है। यह साउथ ईस्ट एशिया रीजन का हेल्थ का न्यूक्लियस बनेगा। और मुझे याद है यहाँ मैडम पूर्णम के क्षेत्रपाल जी बैठी हैं, उस समय चर्चा हो रही थी कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन का कहीं ऑफिस और बने। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब भारत में है तो भारत में आगे बढ़ेगा और ये नई बिल्डिंग भी भारत की सरकार बना करके देगी और वह आज हम सबको साकार होता हुआ दिख रहा है। ये जो बिल्डिंग है निश्चित रूप से यह एक स्ट्रक्चर है, लेकिन यह न्यूक्लियस है जहां आगे चल करके हम हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे और उसी तरीके से इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ हर एक देश के रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हेल्थ के चैलेंजेस रहे हैं, जिनको हम लोगों ने बखूबी पिछले सालों में एड्रेस किया है, उसको और तीव्र गति मिलेगी और इस तरीके से यह एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यहाँ आपके साथ यह भी शेयर करना चाहता हूँ कि आज भारत ट्रकोमा फ्री सर्टिफिकेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो चुका है। मीजल्स रुबेला के चैंपियन अवार्ड भारत को मिल चुका है। ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोफिस अवार्ड फॉर टोबैको कंट्रोल यह भी भारत ने हासिल किया है और हमारी फार्माकोपिया भी इंटरनेशनली इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज हो रही है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद भी देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सब चीज़ें आगे बढ़ी हैं। इस समिट में जो कलेक्टिवली हम लोगों ने सोचा है, मुझे स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहने के नाते इस बात का विश्वास हुआ और तजुर्बे से ये मैं समझा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत दूरगामी प्रभाव स्वास्थ्य को सोचते हुए जो हम लंबे समय से स्वास्थ्य की सेवाएं साइलोज में कर रहे थे, उसको इंटीग्रेट करने का और सबको जोड़ने का काम आपकी नीति और आपके दृष्टि और दिशा ने किया है। इसके लिए विशेष करके आपको बधाई देता हूं और आज ये समिट उसका नतीजा है। यहाँ से निकले हुए फैसले निश्चित रूप से मानवता की सेवा में आगे बढ़ेंगे और जो आपका कहना है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच एंड होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच, इसको लेकर के हम आगे चलेंगे, यह हमें सफलता देगी। एक बार पुनः इस समिट को सफलता की ओर ले जाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। Thank you, Honourable Minister, sir. May I now respectfully invite the Honourable Prime Minister of India to kindly launch a series of significant Ayush initiatives, marking another significant step in advancing holistic and people-centered health worldwide. First, we have a new commemorative postal stamp on Ashwagandha, designed by the Department of Posts in collaboration with the Ministry of Ayush for release, which symbolizes the global importance of India's traditional medicine heritage. The 5 rupee denomination stamp is intended to highlight the global recognition and resonance of Ashwagandha as an integral part of traditional medicine systems. Ladies and gentlemen, as traditional medicine systems gain wider global acceptance, the need for structured, evidence-based, and standardized training becomes ever more critical. The next launch addresses this very foundation, prepared by the WHO
in coordination and collaboration with the Morarji Desai National Institute of Yoga and Naturopathy, this technical report on training in yoga provides a comprehensive framework for quality, safety, and consistency in yoga education. May I request the Honorable Prime Minister, sir, to please release the technical report on training in yoga by WHO. The future of a healthy world depends on inclusion, integrated vision, and collaboration. Training in Yoga Technical Report. WHO has developed this report in collaboration with Ministry of Ayush, Government of India. This document marks an important step in recognizing yoga as a safe, evidence-informed and people-centered health practice. The report brings together a global view of yoga training curricula and outlines the essential competencies needed for both basic and advanced training. साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाए, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए. Yoga is a practice which gives health assurance with zero spending for millions of people, especially in India, the birthplace of yoga. This work helps ensure that yoga services offered in communities, hospitals, and wellness settings are delivered responsibly and effectively. From knowledge systems nurtured over centuries to structured evidence-based practices embraced globally, the Ayush journey over the past decade has been one of transformation, integration, and international collaboration. Prime Minister, sir, the next launch captures this remarkable evolution. From roots to global reach, 11 years of transformation in Ayush. It chronicles how India's traditional medicine systems have strengthened institutions, expanded access, advanced research, and found a respected place in global health conversations. From roots to global reach, traditional knowledge while innovating for tomorrow. Welcome to the future of wellness. As traditional medicine systems expand in scale and reach, seamless digital integration becomes essential. The My Ayush Integrated Services Portal, or MAISP, brings together services, institutions, and stakeholders on a single national digital platform, strengthening transparency, accessibility, and coordination across the Ayush ecosystem. May I now invite the Honorable Prime Minister to launch this by pressing the remote. India is redefining healthcare delivery at a national scale. Introducing My Ayush Integrated Services Portal, MAISP, a transformative digital infrastructure uniting tradition with innovation. Under Ayush Grid Initiative, MAISP serves as the master application integrating healthcare, education, and awareness on a single platform. Advanced real-time dashboards ensure transparency and data-driven decision-making, complemented by AI-powered chatbot support.
It empowers government departments, institutions, startups, and innovators to engage with a dynamic, technology-driven Ayush ecosystem, aligned with India's vision of Viksit Bharat 2047 with Ayushman Bharat Digital Health Mission (ABTM). Our final launch is of Ayush Mark, a benchmark that addresses the need for global acceptance, trust, quality, and credibility. Establishing clear, transparent, and internationally aligned standards for the quality of Ayush products and services is very important. By reinforcing safety, authenticity, and global confidence, Ayush Mark will strengthen India's leadership in responsible traditional medicine and support its wider acceptance across health systems worldwide. May I request the Honorable Prime Minister to launch Ayush Mark by clicking the remote. भारत एक स्पेशल आयुष मार्क भी बनाने जा रहा है जिसकी एक ग्लोबल पहचान बनेगी। Introducing the Ayush Quality Mark, a national symbol of world-class quality. This mark of distinction spans the entire Ayush ecosystem, from authentic medicinal products and cultivated plants to accredited hospitals and state-of-the-art testing laboratories. What does this mark represent? Safety, purity, evidence-based practice, and international credibility. It's more than certification. It's a promise of quality that the world can trust. India's leadership in traditional medicine, recognized worldwide as a symbol of trust, quality, and wellness. India's commitment, ladies and gentlemen, to advancing traditional medicine is echoed by all countries here in the room today. Earlier today, all of the 24 international health ministers sat together to discuss how to advance innovation, investment, policy, and regulation. Their political leadership is expressed not only in words, but in smart commitments, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound pledges. This lasting legacy of the 2025 summit is announced here today. But everyone has a role to play. Academia, professional groups, NGOs, and the private sector, too, are pledging their commitment today. Today we share nearly 60 new smart commitments from these groups to drive our work forward together.
Accountability is at the heart of our work together. We will be back in 2 years at the next Global Summit to assess our progress and see what has been achieved, and to help WHO deliver its commitments to traditional medicine. We today announce the launch of WHO's Strategic and Technical Advisory Group on Traditional Medicine. The STAG is a formal WHO advisory mechanism composed of independent experts who provide strategic, scientific, and technical advice to WHO on traditional medicine. The establishment of this group represents a significant step in implementing the WHO Global Traditional Medicine Strategy 2025-2034. Ladies and gentlemen, the Delhi Declaration represents the official outcome document of the Global Summit on Traditional Medicine, convened from the 17th to the 19th of December 2025. This landmark declaration is to advance the implementation of the new Global Traditional Medicine Strategy 2025-2034, adopted at the 78th WHA in May 2025. Formulated through extensive deliberations, consensus building, and commitments made by participating member states and stakeholders, the declaration embodies a collective vision for strengthening the role of traditional medicine in global health systems. May I now invite the Director General of the World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, to address the august gathering. Thank you, Moderator. Your Excellency, Prime Minister Modi, Excellencies, Ministers, distinguished leaders, traditional healers, dear colleagues and friends. Namaste. I extend my deepest appreciation to the government and people of India, and in particular to Prime Minister Modi for hosting this summit and for his unwavering and continued leadership and partnership. Your Excellency, your vision of One Earth, One Health encapsulates the principles of traditional medicine. Balance between people and nature, an emphasis on prevention over cure, and health as a shared responsibility. It aligns powerfully with WHO's mission to promote health equity, sustainability, and resilience. Under your leadership, India has helped to elevate traditional medicine in the global health agenda, and it's now clearly on the global map. From the establishment of a dedicated Ministry of Ayush to the creation of the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar, India has shown that tradition and innovation, heritage and science can advance together. Through its centuries-old Ayush systems, India has shown the world that traditional wisdom and modern science are not inconsistent, but complementary. Over the past 3 days, voices from more than 100 countries have come together,
scientists, practitioners, ministers, and indigenous leaders, innovators, and communities. You have come from different traditions and different systems, but with one shared purpose: to bridge ancient tradition and modern science. Together, you have shown that traditional medicine is not a relic of the past. It's not an alternative at the margins. It's a living science, a shared heritage, and an important element of universal health coverage, resilient health systems, and sustainable development. Traditional medicine can help to address many of the threats to health of our modern world. The growing burden of non-communicable diseases, inequitable access to health services, and climate change. It can help to support care that's person-centered, culturally grounded, and holistic. Through the Delhi Declaration or Commitment, countries have agreed not only on why traditional medicine matters, but on how to act. We have agreed to strengthen the evidence base, using rigorous, ethical, and pluralistic research that respects whole systems and indigenous knowledge. We have agreed to ensure safety, quality, and public trust through coherent and risk-based regulation. We have agreed to safeguard biodiversity and traditional knowledge while respecting cultural heritage, intellectual property, and equitable benefit sharing. We have agreed to harness digital technologies and innovation responsibly to improve access, research, and data generation. And we have agreed to integrate safe and effective traditional medicine into health systems, especially primary health care, where it delivers clear, evidence-informed value. These priorities are at the heart of the WHO Global Traditional Medicine Strategy 2025 to 2034, a strategy grounded in science, guided by ethics, and driven by equity and global solidarity. Today, we also mark a historic step forward with the launch of the WHO Global Traditional Medicine Library. This library is far more than a repository of knowledge. It's a platform of trust. It will protect intellectual property and community rights, support equitable access and benefit sharing, and enable evidence-informed policy, education, and innovation globally and across generations. It's a powerful response to the call issued by Prime Minister Modi for global stewardship of traditional knowledge, a call echoed across the G20, BRICS, and beyond. Excellency, Prime Minister, Excellencies, the real success of this summit will be measured not by what we agreed here in New Delhi, but by what happens next in countries and communities. That means translating commitments into national policies and regulatory frameworks. It means investing in research, education, and workforce development.
It means integrating traditional medicine responsibly and safely into health systems, and it means ensuring tangible, equitable benefits for people, especially those most underserved. And I was very encouraged to hear to all the ministers of health who have been sharing their experience during the ministerial round table, and of course the heads of delegation. And WHO stands fully committed to walking this path with you through the Global Traditional Medicine Center, technical cooperation, shared standards, and transparent accountability. But your message today was very clear at the ministerial round table. As we conclude this summit, let us live united by a shared conviction that the future of health must be integrative, inclusive, and evidence-informed. That science and tradition are not opposites, but partners. And that by restoring balance between people, communities, and the planet, we can build healthier societies for generations to come. Prime Minister Modi's leadership has helped bring this vision to the world stage. Your Excellency, thank you. Your Excellency, I look forward to your reflections and guidance as we move from commitment to action. Thank you for your leadership. Thank you for your partnership. And thank you for shaping this future together. Bahut dhanyavad. Thank you very much. Thank you. Maybe of my script, he just came from a successful visit to my country, and I'm in his country. And I could see his trip was very intense, and I'm really surprised that he joined us here, and that shows his strong commitment. So thank you so much again. And again, my bahut dhanyavad, Your Excellency. Thank you very much. Thank you, Dr. Tedros. We now look to leadership that has consistently championed harmony between tradition and modernity, between health and humanity. Ladies and gentlemen, it is my honor now to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to share his thoughts with us. WHO के डायरेक्टर जनरल हमारे तुलसी भाई, डॉक्टर टेड्रोस, केंद्रीय स्वास्थ्य में मेरे साथी मंत्री जेपी नड्डा जी, आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव जी, इस आयोजन से जुड़े अन्य देशों के सभी मंत्रीगण, विभिन्न देशों के राजदूत, सभी सम्मानित प्रतिनिधि, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्षेत्र में काम करने वाले सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज दूसरी WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का समापन दिन है। पिछले 3 दिनों में यहां पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने
गंभीर और सार्थक चर्चा की है। मुझे खुशी है कि भारत इसके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है और इसमें WHO की भी सक्रिय भूमिका रही है। मैं इस सफल आयोजन के लिए WHO का, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का और यहां उपस्थित सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है और भारत के लिए गौरव की बात है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत के जामनगर में स्थापित हुआ है। 2022 में ट्रेडिशनल मेडिसिन की पहली समिट में विश्व ने बड़े भरोसे के साथ हमें ये दायित्व सौंपा था। हम सभी के लिए खुशी की बात है कि इस ग्लोबल सेंटर का यश और प्रभाव लोकली से लेकर के ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा है। इस समिट की सफलता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस समिट में ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न प्रैक्टिसेस का कन्फ्लुएंस हो रहा है। यहां कई नए इनिशिएटिव भी शुरू हुए हैं जो मेडिकल साइंस और होलिस्टिक हेल्थ के फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समिट में विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों के लिए बीच विस्तार से संवाद भी हुआ है। इस संवाद ने जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा देने, नियमों को सरल बनाने और ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग के लिए नए रास्ते खोले हैं। ये सहयोग आगे चलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन को अधिक सुरक्षित, अधिक भरोसेमंद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, इस समिट में कई अहम विषयों पर सहमति बनना हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतिबिंब है। रिसर्च को मजबूत करना, ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना, ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना जिन पर पूरी दुनिया भरोसा कर सके, ऐसे मुद्दे ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत सशक्त करेंगे। यहां आयोजित एक्सपो में डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी, AI आधारित टूल्स, रिसर्च इनोवेशन और आधुनिक वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के जरिए हमें ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का एक नया कोलैबोरेशन भी देखने को मिला है। जब ये साथ आती हैं तो ग्लोबल हेल्थ को अधिक प्रभावी बनाने की क्षमता और बढ़ जाती है। इसलिए इस समिट की सफलता ग्लोबल दृष्टि से बहुत ही अहम है। साथियों, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। भारत के प्रयासों और 175 से ज्यादा देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को योग दिवस घोषित किया गया था। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते देखा है।
मैं योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना करता हूं। आज ऐसे कुछ चुनिंदा महानुभावों को पीएम पुरस्कार दिया गया है। प्रतिष्ठित जूरी सदस्यों ने एक गहन चयन प्रक्रिया के माध्यम से इन पुरस्कार विजेताओं का चयन किया है। ये सभी विजेता योग के प्रति समर्पण, अनुशासन और आजीवन प्रतिबद्धता के प्रतीक है। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। मैं सभी सम्मानित विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि इस समिट के आउटकम को स्थायी रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी के रूप में एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े वैज्ञानिक डेटा और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह सुरक्षित करेगा। इससे उपयोगी जानकारी हर देश तक समान रूप से पहुंचने का रास्ता आसान होगा। इस लाइब्रेरी की घोषणा भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान पहली WHO ग्लोबल समिट में की गई थी। आज ये संकल्प साकार हो गया है। साथियों, यहां अलग अलग देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने ग्लोबल पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक साझेदार के रूप में आपने स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। इस संवाद से जो दिल्ली डिक्लेरेशन इसका रास्ता बना है, वो आने वाले वर्षों के लिए एक साझा रोड मैप की तरह काम करेगा। मैं इस जॉइंट एफर्ट के लिए विभिन्न देशों के माननीय मंत्रियों की सराहना करता हूं। उनके सहयोग के लिए मैं आभार जताता हूं। साथियों, आज दिल्ली में WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफिस का उद्घाटन भी किया गया है। ये भारत की तरफ से एक विनम्र उपहार है। ये एक ऐसा ग्लोबल हब है जहां से रिसर्च, रेगुलेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, भारत दुनिया भर में पार्टनरशिप ऑफ हीलिंग पर भी जोर दे रहा है। मैं आपके साथ दो महत्वपूर्ण सहयोग साझा करना चाहता हूं। पहला, हम बिम्स्टेक देशों यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में हमारे पड़ोसी देशों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं। दूसरा, हमने जापान के साथ एक कोलैबोरेशन शुरू किया है। ये विज्ञान, पारंपरिक पद्धतियां और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। साथियों, इस बार इस समिट की थीम है रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। रिस्टोरिंग बैलेंस ये होलिस्टिक हेल्थ का फाउंडेशन थॉट रहा है। आप सब एक्सपर्ट अच्छी तरह जानते हैं, आयुर्वेद में बैलेंस अर्थात संतुलन को स्वास्थ्य का पर्याय कहा गया है। जिसके शरीर में ये बैलेंस बना रहता है वही स्वस्थ है, वही हेल्दी है। आजकल हम देख रहे हैं डायबिटीज, हार्ट अटैक, डिप्रेशन से लेकर कैंसर तक
अधिकांश बीमारियों के बैकग्राउंड में लाइफस्टाइल और इम्बैलेंसेस एक प्रमुख कारण नजर आ रहा है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस, डाइट इम्बैलेंस, स्लीप इम्बैलेंस, गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस, कैलोरी इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस, आज कितनी ही ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस इन्हीं इम्बैलेंसेस से पैदा हो रहे हैं। स्टडीज भी यही प्रूव कर रही है, डेटा भी यही बता रहा है कि आप सब हेल्थ एक्सपर्ट्स कहीं बेहतर इन बातों को समझते हैं। लेकिन मैं इस बात पर जरूर जोर दूंगा कि रिस्टोरिंग बैलेंस आज ये केवल एक ग्लोबल कॉज ही नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल अर्जेंसी भी है। इसे एड्रेस करने के लिए हमें और तेज गति से कदम उठाने होंगे। साथियों, 21वीं सदी के इस कालखंड में जीवन के संतुलन को बनाए रखने की चुनौती और भी बड़ी होने वाली है। टेक्नोलॉजी के नए युग की दस्तक एआई और रोबोटिक्स के रूप में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव आने वाले वर्षों में जिंदगी जीने के हमारे तरीके अभूतपूर्व तरीके से बदलने वाले हैं। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा, जीवन शैली में अचानक से आ रहे इतने बड़े बदलाव शारीरिक श्रम के बिना संसाधनों और सुविधाओं की सहूलियत, इससे ह्यूमन बॉडीज के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा होने जा रही हैं। इसलिए ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में हमें केवल वर्तमान की जरूरत पर ही नहीं फोकस नहीं करना है, हमारी साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले फ्यूचर को लेकर के भी है। साथियों, जब पारंपरिक चिकित्सा की बात होती है तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आता है। ये सवाल सुरक्षा और प्रमाण से जुड़ा है। भारत आज इस दिशा में भी लगातार काम कर रहा है। यहां इस समिट में आप सभी ने अश्वगंधा का उदाहरण देखा है। सदियों से इसका उपयोग हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में होता रहा है। कोविड-19 के दौरान इसकी ग्लोबल डिमांड तेजी से बढ़ी और कई देशों में इसका उपयोग होने लगा। भारत अपनी रिसर्च और एविडेंस बेस्ड वैलिडेशन के माध्यम से अश्वगंधा को प्रामाणिक रूप से आगे बढ़ा रहा है। इस समिट के दौरान भी अश्वगंधा पर एक विशेष ग्लोबल डिस्कशन का आयोजन किया गया। इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने इसकी सुरक्षा, गुणवत्ता और उपयोग पर गहराई से चर्चा की। भारत ऐसी टाइम टेस्टेड हब्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह कमिटेड होकर काम कर रहा है। साथियों, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर एक धारणा थी कि इसकी भूमिका केवल वेलनेस या जीवन शैली तक सीमित है, लेकिन आज ये धारणा तेजी से बदल रही है। क्रिटिकल सिचुएशन में भी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रभावी भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आयुष मंत्रालय और WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ने नई पहल की है। दोनों ने भारत में इंटीग्रेटिव कैंसर केयर को मजबूत करने के लिए एक जॉइंट एफर्ट्स किया है। इसके तहत पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक कैंसर उपचार के साथ जोड़ने का प्रयास होगा। इस पहल से एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन तैयार करने में भी मदद मिलेगी। भारत में कई अहम संस्थान स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही गंभीर विषयों पर क्लिनिकल स्टडीज कर रहे हैं। इनमें एनीमिया,
आर्थराइटिस और डायबिटीज जैसे विषय भी शामिल है। भारत में कई सारे स्टार्टअप्स भी इस क्षेत्र में आगे आए हैं। प्राचीन परंपरा के साथ युवा शक्ति जुड़ रही है। इन सभी प्रयासों से ट्रेडिशनल मेडिसिन एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ती दिख रही है। साथियों, आज पारंपरिक चिकित्सा एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। दुनिया की बड़ी आबादी लंबे समय से इसका सहयोग लेती आई है, लेकिन फिर भी पारंपरिक चिकित्सा को वो स्थान नहीं मिल पाया था जितना उसमें सामर्थ्य है। इसलिए हमें विज्ञान के माध्यम से भरोसा जीतना होगा। हमें उसकी पहुंच को और व्यापक बनाना होगा। ये जिम्मेदारी किसी एक देश की नहीं है, ये हम सबका साझा दायित्व है। पिछले 3 दिनों में इस समिट में जो सहभागिता, जो संवाद और जो प्रतिबद्धता देखने को मिली है, उससे ये विश्वास गहरा हुआ है कि दुनिया इस दिशा में एक साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आइए हम संकल्प लें कि पारंपरिक चिकित्सा को विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Prime Minister, sir, for your guidance and steadfast commitment to wellness, prevention and inclusion of health. Your words today, sir, will continue to shape global conversations and collective action in traditional medicine. Ladies and gentlemen, thank you for being with us for the second WHO Global Summit on Traditional Medicines.